Hello guys, I am Vaibhav. I got rank 771 in 2019 UPSC. I belong to Central Service, which is the Indian Postal Services. So I will be taking discussion on the essay test. I think it is the third essay test, and we will deal with each and every topic here. So I will give a broad guidelines about what to write in which essay and what not to write in each essay. I will try my best to tell you about my techniques, about what I write, what some toppers write. So let's start with the essay directly without wasting any time. So I am assuming that you all know how to write essay. You have a basic understanding about what to write in essay, like stakeholder approach, sectoral approach, temporal approach. So that's why I will not dwell in a depths about how to write essay. We will directly take a topic and we will go one by one, and I will tell you how to choose a topic in essay also. So we will go directly towards the questions or toward actual essay topics without wasting any time. So section 1 and section B, you have to write one essay from each of the sections, and how to choose essay topic to write essay is very important, because you have to write 2 essays, and mostly what I do is in initial 5 or 10 minutes I choose a topic from both the sections, so that I don't stress about the second topic after the first essay is completed. Like for example, अगर मैंने essay 1 लिख दिया और मेरा थोड़ा टाइम ज़्यादा चला गया, तो क्या हो जाता है, फिर मैं हड़बड़ी में थोड़ा सा गलत essay चूज़ कर लेता हूँ सेकंड में. तो ऐसा ना हो, इसलिए आई रिकमेंड कि दोनों सेक्शंस के दोनों टॉपिक्स इनिशियली ही डिसाइड कर लेना. ठीक. सो how to choose a topic from 2 sections, it depends on the body part of your essay. If you have adequate content regarding the body, then you should write that essay. Don't think that I have a good introduction for Indian foreign policy, government is best, because introduction is only the 10% of your essay. The maximum 80% is of your the body part. So that's why choose your topic according to the body part of the essay. So देखो कि the first topic, the Union Civil Code, will it work in India? This is called UCC. DPSP में दिया है. So Uniform Civil Code, will it work in India or not? This is the topic. So this is a UCC. This is your theme of your essay. ठीक. तो divide your, let's say this is your page of your essay answer booklet. Divide your page in these sections. ठीक. Here I will write idea about introductions. Introduction के ideas लिखो. यहाँ body के points लिखो. Conclusion के ideas लिखो. यहाँ डाटा, कमिटी, स्टैटिस्टिक्स, इसको. This is your rough page. ठीक. This is your rough page. So divide your page in these blocks so that you have good differentiation or good compartmentalization of your points, or how you are going to arrange your essay. So this will be helpful while writing actual essay. So I hope you got idea. This is how I do the rough work.
what is a uniform civil code? So under DPSP, Constitution says that there should be a uniform civil code for all the communities or all the citizens, right? What is the uniform civil code? So the basic is ki we have a different laws for different communities, like Hindu special marriages act, Hindu law, Hindu code bills and other. So Sharia laws, Sarda Act. So these are different laws for different communities. So this create an difference jurisprudence of a different communities, right? So this create an issue on a judiciary also, and issue on the communities also, because for example, triple talaq, Muslim women are treated differently and they have different recourse for their divorce as compared to the Hindu women, right? So this is the main the crux of the topic. So we will first deal with the body, what to write in the body, then we will go for the introduction के क्या क्या ideas है, और फिर देखेंगे conclusion. This UCC Uniform Civil Code is not a general topic like education, health. Uniform Civil Code is not like any general topic like education, health, where you can write your essays on sectoral basis. Society में क्या होगा, polity में क्या होगा, economy में क्या होगा, environment में क्या होगा. So this is how you can write an essay on sectoral basis in general topic like education, health, economics. But Uniform Civil Code is to the point topic, like it is a very specific topic. You have to write your essay on the specificity of the topic, right? It doesn't affect the economy as such, environment as such, technology as such. So you have to write your essay considering the actual critical points or debatable topics. So there is a topper, is Vikram Gairwal or something. He got into IFS. So what he does is he don't differentiate the essay in a sectors. He makes sure that he has issues. He points out the issues. 20 issues. One paragraph per issue. This means 20 paragraphs. 2 paragraphs per page. 10 pages. So this is his basic strategy about how to write essay. So in Uniform Civil Code or in any topic which is a special topic or to the point topic, or which is not a generalistic topic, so you should write essay according to the issues, not according to stakeholders, because stakeholder temporal approaches थोड़ा difficulty हो जाता है. In Uniform Civil Code, we will write that in that Vikram style. We will make sure that we have some issues. We will elaborate those issues in 2-3 paragraphs. We will first point out in rough page which are the issues. If we have enough issues, then we will divide the one issue 1 paragraph. But if we don't have enough issue, then we will directly go we will make sure that we are writing one issue in a 2-3 paragraph, so that we complete the word limit and we complete the page limit also. So what are the issues? It says will it work in India? So that means it is saying us to critically examine whether it will work in India or not. So first we know whether it is a politically sensitive topic, and so without going into politics, we have to write the issue. We don't have to write about the politics. We should focus on a policy of UCC only. Okay? So what are the issues? So let's point out the issues first.
parts, like whether in one part you will write about the benefits, you will write about the challenges. You first start with the benefits so that you give a proper analysis of what is UCC, what will happen if India implements UCC. So this will create a good context for your essay. So when you write about the challenges, you can write why it will not work or why it will work and why it should work, and then you can directly go for the solutions. So what are the points of the benefits? What are the benefits of the UCC? What are the benefits of the UCC? First, divest religion from social relations and laws. Okay. So if UCC is implemented, it will create a space for the personal laws and social relations away from the religion, because if you in today Sharia or Sarda Act influence the personal laws, right? So it creates a interlinked relation between the personal laws and the religious principles. So the personal laws are affected by the religious principles, which are sometimes not reasonable, like triple talaq, फिर बहुदियोरा कम्युनिटी में जो होता है, ठीक। तो इसकी वजह से यूसीसी लाने से रिलीजन सेपरेट हो जाएगा. दिस विल बी योर वन इशू, ठीक. So you have to write 2 paragraphs here. ठीक. Ensures equality justice for men and women. Ensures equality of justice for men and women, because without UCC mostly women are affected. They don't have property rights, they don't have the alimony rights or divorce right, they don't have recourse for the justice, because the religious institutions have a distinct impact on these women. So that's on the religious issues, like the family issues. So that's why they have a different impact for the women as compared to the men. So implementing the UCC will create a equality and justice. इसके बारे में लिखो 2 paragraphs, ठीक. Improves condition of women. So UCC से क्या होगा कि women will be as if at same par with men. It will create an woman empowerment, because they can file for the divorce easily. They can get alimony. They will get a property right in their parental property. So this will create an equal condition as women is concerned, because in religious matters women are not treated as equal. You can see that in ceremonies the male members have more right or more responsibility as compared to the female members, okay? So this will be your third issue. You write 2 paragraphs here. Explain that in detail with examples, with some case studies if you have any. Personal laws are exploited by those in power.
religious leaders, political leaders have a exponential power to have impact on personal laws. For example, they create it as political issues. The religious leaders interfere in the personal lives, family lives through the personal laws. So that's why it creates a power difference in personal life. Okay. So write about this in 2 paragraphs. Okay. Then 5th issue. Reduce the vote bank politics. You have seen that in 2018 and 2019 triple talaq was a political issue in Uttar Pradesh and all the North Indian states where the elections were taking place. So you can say you must have seen the different political parties using UCC as a method to attract the votes from the heartland, as we say. So it creates the political havoc also in democratic processes, and it creates a vote bank politics, which is not good for Indian democracy in long run. So you have to write that in 2 paragraphs. So see, 2. These are the 10 paragraphs. Paragraphs of benefits. Benefits. Okay. So after writing these paragraphs of benefits, you have to write about the challenges, why it will not work or why it will work. What are the challenges for UCC in India? So before directly moving towards the challenges, we have to connect the benefit with the challenges. So write something that having said these, having enlisted the benefits of the UCC, we have seen that it has been difficult for India to implement UCC. So why it is difficult for India, that also should be discussed here. So now we will discuss the challenges of the UCC. ऐसा करके लिखने के बाद directly go towards the challenges, where you can directly write each and every issue of the challenges in same way in 2 paragraphs. So it will make your say in 20 paragraphs. So that is the body part of 20 paragraphs. So challenges to UCC. So according to Law Ministry, first challenge is conservatism. The Indian population is predominantly conserved in nature, so they don't look positively towards any new changes. So write about this in 1 paragraph, 1 or 2 paragraphs. Give examples also. India ne, we can see that in same-sex marriages or same-sex relations, that we have seen that India has been conservative. In same way, in religious matters also, India is a conservative country. Misconceived notion about personal law.
misconceived notion about personal law. In India, many communities consider their personal laws as above the regular laws. They consider that as the primary source of legality for their community. So it has placed the personal laws at a place of holy place. So write about this also in one paragraph. Separatism. Tendency of separatism in India, where few religious communities will have power, so they generally try to protect their community or communal laws. But when there is an onslaught on those unreasonable laws, they make this as an onslaught on their religion, their personal life, and they create a tendency of separatism, like in Punjab. So this is also a challenge of UCC. Write about this in 2 paragraphs. The fourth point is India has long history of personal laws. Long history of Indian personal laws that are continuing from many centuries, so it cannot be easily given up by the Indian government or Indian people. So we tend to protect our history, so we have a different personal history, law history. So this is also issue. I write about this in the 2 paragraphs. The fifth is the issue of codification. And consensus. Issue of codification and consensus. Will it be easier to codify the law which will be acceptable to all the communities, whether there will be consensus on a drafted the law? So this is also fifth issue. So write in 2 paragraphs. So देखो एक दो 8 paragraphs of challenges. So now you have enough content or enough idea or enough guidelines for how to write a body in such specific issue topic. So now we have written something about the benefits, we have written something about the challenges. Now we will write something about the way forward. So we know that it is a difficult, accept the fact that it is a difficult for India at present time to implement the UCC. So before implement the UCC, Indian government or India should try to build a consensus. That should be our stand. Because without consensus, we have seen the farm laws got repealed in a few months. So 1 year in fact. So we have to build a consensus. Build back better consensus. Build back better consensus. ठीक. तो before simultaneously we should
look out for implementing law commission recommendations. Law commission recommendations. So what are the law commission recommendations? तो each recommendation को आपको एक पैराग्राफ या दो रिकमेंडेशन को एक पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन करना है. फर्स्ट रिकमेंडेशन क्या है लॉ कमीशन का? रिमूव डिस्क्रिमिनेटरी provisions from personal laws in meantime. मतलब अभी के लिए रिमूव कर दो जो भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस है. ठीक. फिर प्रोविजन ऑफ डिवीजन ऑफ property after divorce equally. सही बात है. रेगुलेशन ऑफ एज ऑफ मैरिज. So these are the three main the recommendations of law commission. तो उनको आप एक एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर देना वे फॉरवर्ड. देन आपने अब बेनिफिट लिखा है, चैलेंजेस लिखे, वे फॉरवर्ड लिखा है. अब एक बॉडी का आपका एक बन चुका है एक फ्रेमवर्क. नाउ आप क्या करेंगे? हम लिखेंगे इंट्रोडक्शंस के आइडियाज. क्या क्या कर सकते हो? आइडिया 1 एनेक्डोट लिखो. कोई तो आपने देखा कि एक वुमन को डिवोर्स ऐसे ही मिल गया, राइट? दूसरी वुमन को जस्ट एक व्हाट्सएप पे या ईमेल पे मिल गया. सो दिस इज बट एट द सेम टाइम हर नेबर Sunita or someone filed a proper divorce case in the courts, in the regular courts. So एक एनेक्डोट लिख सकते हो. सेकेंड, करंट अफेयर्स का रेफरेंस दे सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने शिरूर मट केस, सरला उदगल केस में सपोर्ट किया है यूसीसी को. आप ऐसे लिख सकते हो इसमें. ठीक. थर्ड, डायरेक्ट डेफिनेशन से स्टार्ट कर दो. यूसीसी जो भी डेफिनेशन है यूसीसी का. सो दिस इज योर इंट्रोडक्शन. और कंक्लूजन को वे फॉरवर्ड के लाइन पे ही कंक्लूजन लिखो कि इंडिया नीड्स टू बिल्ड प्रॉपर कंसेंसस बिफोर implementing the required UCC. Yes, UCC is the need of our, but the consensus is the need of second. This is your first essay. So then what is the second essay? We will
first discuss third essay, India's foreign policy, emerging trends, because we can write that essay in a similar way like first issue wise. So we will first deal with that, India's foreign policy, emerging trends. Foreign policy, emerging ट्रेंड्स, ठीक। सो दिस इज योर सेकेंड टॉपिक, मतलब थर्ड टॉपिक है बट सेकेंड डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली अगर ऐसा एक ब्रॉड वे में आया है कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी और इंडियाज स्टेट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और इंडियाज पोजीशन एट द हाई टेबल, ऐसा कुछ भी टॉपिक आए ब्रॉड लेवल में, उसको डिवाइड कर देना। बॉडी, लाइक आई सेड कि एक सब पेज बनाओ, इंट्रोडक्शन, बॉडी, इवेंट्स, यहाँ स्टैटिस्टिक, ये डाटा नहीं आएगा इसलिए कंक्लूजन। सो दिस इज योर रफ पेज। ठीक, तो उसको ऐसे ही उसी वे में लिखो। तो बॉडी के आइडियाज देखो, हमेशा रफ पेज में फर्स्ट बॉडी ही लिखना। यू कैन इजीली राइट इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द बॉडी, बट यू कांट राइट योर बॉडी अकॉर्डिंग टू द इंट्रोडक्शन। तो मोस्ट ऑफ द मार्क्स आर फॉर द बॉडी, सो राइट बॉडी फर्स्ट। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग you how to write body first. So in foreign policy or in international relation, always divide topics in temporal. एंशिएंट में कैसा था, मिडिवल में कैसा हुआ, मॉडर्न में कैसा हुआ, करंट में कैसा है। दिस इज योर टेम्पोरल एस्पेक्ट कि एंशिएंट इंडिया में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी थी, मिडिवल में कैसी हुई, ब्रिटिशर्स के टाइम में मॉडर्न में कैसी हुई, और करंट इंडिया का कहाँ पोजीशन है। एक आप ब्रीफ हिस्टोरिकल अकाउंट दे दोगे। Brief historical account India's foreign policy. So this gives a context to your topic, what is India's foreign policy, and so that you can write in detail about the current state or current trends in Indian foreign policy. तो अब टॉपिक क्या है कि emerging trends के बारे में लिखना है। What about the new developments in the India's foreign policy. तो ऐसे टॉपिक को ना एक ब्रॉड वे में डिवाइड कर देना। जियो स्ट्रैटेजिक ट्रेंड्स, जियो पॉलिटिकल ट्रेंड्स, जियो इकोनॉमिकल, एंड ऑथर्स। इससे आपको ना एक आपके हिस्से को डिवाइड करना है, जियो स्ट्रैटेजिक, जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिकल एंड अदर इश्यूज और अदर ट्रेंड्स। तो ईच हेड में देखो कि क्या क्या इंडिया के ट्रेंड्स है। ठीक, व्हाट आर द डिफरेंट ट्रेंड्स ऑफ इंडिया और फॉर इंडिया इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी और इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो जियो स्ट्रैटेजिक में क्या है कि अब सबसे बड़ा क्या चल रहा है इंडिया का,
Indian Ocean. Quad. सही बात. Neighborhood. So emerging, hegemon, it is China. ठीक. India's strategy to gain seat at high table. UN bodies, India is chairman of or on the chair of many UN bodies. So उसके बारे में आप लिख सकते हो. तो these are the geostrategic trends in India's foreign policy. The one is important is just security provider. India is emerging as a security provider for the Afghanistan, फिर Indian Ocean states, Indian littoral states, Indian Ocean littoral states. So this is the geostatic trends or geostrategic strength of India in India's foreign policy or India's emerging foreign policy. तो इसके बारे में आपको ना एक पैराग्राफ लिखना है. ठीक. तो इससे क्या होता है कि आपका एक जो स्ट्रैटेजिक है ना, हर डायमेंशन को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो. कि ऐसे में ऐसा नहीं कि यू हैव टू राइट मल्टीपल डायमेंशन और मेनी पॉइंट्स, बट यू हैव टू राइट अ फ्यू पॉइंट्स इन अ ग्रेट डिटेल. ठीक, समझ रहे हो? तो ऐसा करके ही आप एक अच्छे से जस्टिस कर पाते हो आप ऐसे के टॉपिक को. तो दिस इज अबाउट द जियो स्ट्रैटेजिक ट्रेंड्स ऑफ दिस. ठीक. देन what are the geopolitical trends? What are the geopolitical trends? So first geopolitical trend is increasing major power struggle. Example: USA, China, USA, Russia. Okay. Then emerging new political realities. China, okay, decreasing presence of USA. ठीक, फिर decrease UN footprint. New political issues. Refugee, migrant, state sponsored terrorism. So these are the new political issues. Emerging need of new political alliance.
So we have seen that in Middle East also USA or USA facilitate the dialogue between Israel and UAE. So this has created a new presence of alliance. So India needs to have alliance with those countries also. So these are the political issues that are affecting India. So these are the geopolitical trends that emerging geopolitical trends in India. So you should write about those also. Geo-economical trends. First is a trade wars as new normal. ट्रेड वॉर्स न्यू नॉर्मल हो चुके हैं कि यूएसए और रशिया में ट्रेड वॉर, यूएसए ईरान में ट्रेड वॉर, यूएसए चाइना में ट्रेड वॉर. तो इन टाइम्स में हाउ इंडिया इज हैंडलिंग द जियो इकोनॉमिकल ट्रेंड्स, so that also affects the Indian foreign policy. तो आपको उसके बारे में लिखा है कि how what India is doing for alleviating itself from getting affected by the geopolitical trends. So that is the one trend. Second is India's growing economical aspirations. So this is the second point. India's growing economical aspirations. Third, emerging technology like AI, Internet of Things, and need of technology. So this also comes on the geo-economical trends. Fourth, global economical bodies suffering from crack in mandate, like WTO का इशू, IMF का इशू. तो इससे भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इज गेटिंग अफेक्टेड now and then. So we have to write about these 4 points in each one paragraphs at least. तो 4 पैराग्राफ्स हो जाते हैं जो इकोनॉमिकल ट्रेंड्स के. Now, other issues. What are the other issues? Emerging new frontiers like space, technology, data. All those comes in the emerging new frontiers, because there is a space, weaponization of space. USA, China ने start किया है weaponization of space. So this is also one of the issue that is affecting India's foreign policy. Okay. Changing domestic perception about foreign issues.
Now Indian citizens or it is Indian people are more aware about the foreign policy and what are the effects of the foreign policy. That is also affecting the India's foreign policy. So these are the few emerging trends. So if we see that we write 1 to 2 paragraphs each, then we write enough content for the India's foreign policy emerging trends. Okay. So this is about the body parts. But important thing in the international relations essay is always the examples. You have to write about the examples. What are the current examples or what are the current events? That are happening around the India. So you have to substantiate your essay with examples and events. You have to write at least one event or one example in each paragraph. So right. So this is the body of your essay. Now, way forward. ईच सेक्टर में लिख दो वे फॉरवर्ड कि जियो पॉलिटिकल में क्या करना है, जियो पॉलिटिक्स में क्या करना है, जियो इकोनॉमिक्स में क्या करना है. बट हमेशा ऐसा वे फॉरवर्ड देखो कि इंडिया इज कोऑपरेशन कोलैबोरेशन कोऑर्डिनेशन. इन 3 वर्ड्स को वे फॉरवर्ड में हमेशा रिफ्लेक्ट करना इन इंटरनेशनल रिलेशंस, because India's foreign policy works on these 3 broad parameters, right? So write about these in a way forward. And up now ideas of introduction. The most easy way to start an international essay is current affairs event. Because it is very easy because you get different ideas from current affairs. आप लिख सकते हो कि चाइना के राइज के बाद इंडिया का इंडियन फॉरेन पॉलिसी का पूरा रुख ही बदला है, पूरा डायरेक्शन ही बदला है. तो वैसे करके आप एक सिंपलेस्ट इंट्रोडक्शन कर सकते हो. बट इफ यू आर अ पर्सन हु रीड डिफरेंट बुक्स, सो देन यू कैन राइट अबाउट द एलिफेंट इन द रूम वाला जो टैक्स इंडिका नाम का बुक है शशि थरूर का. फिर ORF का जो डिलिब्रेशंस और डिस्कशंस होते हैं आप उसके बारे में भी लिख सकते हो. सो दिस इज अबाउट द सेकेंड एसे. दिस इज द इंट्रोडक्शन. द कंक्लूजन इज ऑलवेज अराउंड द वे फॉरवर्ड. दैट शुड बी द ऑप्टिमिस्टिक एंड वन ऑफ द इजी वे टू राइट इफेक्टिव कंक्लूजन इज कीवर्ड्स. श्लोक्स बड़े कीवर्ड्स होते हैं ना, कोऑपरेशन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक, गेटिंग सीट एट हाई टेबल, डांसिंग एलिफेंट. So that should be used in conclusion. Or if you know any shlok in Sanskrit, then write that in a Sanskrit and then translate that into English. So this could be done in a good way. So this was about the second topic. Global trade war. We will talk about the fourth topic, global trade war. So this is very specific topic, right? Like I said, in specific topic you can't write a sectoral or stakeholder approach. You have to direct write about the issues and explain each issue.
in detail. Global trade wars, where we are heading, issues and explain each issue in great detail. So this is very specific topic. ठीक, ग्लोबल ट्रेड वॉर, इकोनॉमिकल ट्रेड वॉर, बट इसका ना अब हमारे पास कंटेंट नहीं होगा, तो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी राइट और कनेक्ट दैट इकोनॉमिकल डायमेंशन विद पॉलिटी। गवर्नेंस मतलब ग्लोबल गवर्नेंस, पॉलिटिकल ग्लोबल गवर्नेंस एंड other effects. Strategic dimension. इकोनॉमी के बारे में तो आप लिख सकते हो कि उससे क्या होगा कि कुछ कंट्रीज डेवलप रहेंगी, कुछ नहीं रहेंगी, बाकी के कंट्रीज के ट्रेड पे भी फर्क पड़ता है बिकॉज ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस। तो ये तो आप लिख सकते हो राइट, कि ग्लोबल ट्रेड वॉर क्या होगा और कैसे उसके इकोनॉमिकल इम्पैक्ट होंगे। तो ये तो बहुत आसान है इकोनॉमिकल इम्पैक्ट लिखना, बट जियो स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट क्या है, तो उससे पावर डायनामिक्स बढ़ेगा, पावर डायनामिक्स चेंज होगा। जियो स्ट्रैटेजिक पावर डायनामिक्स चेंज होगा। एक हाइटेंड रेस होगी टू मेक अलायंस। पावर डायनामिक्स होगा, हाइटेंड रेस होगी टू मेक अलायंसेस। फिर इससे ग्लोबल आर्म रेस भी बढ़ सकता है ड्यू टू इनसिक्योरिटी डिलेमा। डेवलपिंग कंट्रीज अफेक्ट हो जाएंगे उससे, कि क्या क्या कैसे उनकी इकोनॉमी में इफेक्ट होगा, कैसे उनके ट्रेड रिलेशंस पे इफेक्ट होगा, तो ये भी अफेक्ट हो जाएगा ट्रेड वॉर से। देन पॉलिटिकल डायमेंशंस क्या होंगे, एज इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स, तो अगर इकोनॉमिकल इम्पैक्ट हो गए तो एनी कंट्री में सिविल वार बढ़ सकते हैं, अनरेस्ट क्रिएट हो सकता है ड्यू टू रिड्यूस इकोनॉमिक चैलेंजेस। ठीक, फिर ग्लोबलाइजेशन एज अ पॉलिटिकल फेनोमेनन को भी अफेक्ट हो सकता है। सही बात। तो फिर बॉर्डर इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं बिकॉज चाइना और यूएसए के ट्रेड वॉर के बाद इंडिया इज फ्रेंड टू यूएसए, देन देयर इज इंक्रीज बॉर्डर इश्यूज इन इंडिया एंड चाइना सिंस वर्ल्ड ट्रेड वॉर हैज बिगन बिटवीन द यूएसए एंड चाइना, राइट। तो इसके बारे में कुछ लिखो आप। अब लिखो ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में। ठीक, कि इससे ट्रेड गवर्नेंस के जो बॉडीज है, एक वर्ल्ड बैंक,
WTO, IMF, इन पे कैसा अफेक्ट हो रहा है? हाउ USA इज hampering the working of World Bank Appellate Tribunal, how WTO is not able to control the trade war and control the impact of trade war on the developing countries. So ये आप लिख सकते हो. फिर एक reduce faith in international relations, international organizations. ये लिख दो. ठीक, तो क्या लिखना है? ग्लोबल गवर्नेंस, ट्रेड गवर्नेंस पे क्या होता है, बॉडीज पे क्या होता है, ये होता है. देन रेस बिटवीन डिफरेंट गवर्नेंस बॉडीज. लाइक जो चाइना की है AIP या न्यू डेवलपमेंट बैंक्स और न्यू डेवलपमेंट बैंक्स, तो उन पे भी कैसा अफेक्ट होगा वो उसके बारे में थोड़ा लिखो. तो एक एंड में लिख देना कि अब ये सब अकाउंट देने के बाद खुद का आपका क्या स्टैंड है कि वो कहाँ जाएगा, उसके बारे में लिख दो कि अगर मेरा खुद का स्टैंड है कि इट विल इफ नॉट कंट्रोल देन इट विल क्रिएट एन रिपल इफेक्ट ऑन द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल इश्यूज, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिकल इश्यूज, एंड इट विल क्रिएट अ different impact on the other issues also. So this is the global trade war is not going in a right places. ऐसा करके आप उसको एक वे फॉरवर्ड दो कि कैसा कैसा करना है कंट्रोल को, यूएन बॉडीज को क्या करना चाहिए, फिर वर्ल्ड बैंक के बॉडीज को क्या करना चाहिए, IMF को क्या करना चाहिए, ईच कंट्री को क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल नेशंस को क्या करना चाहिए, उसके वे फॉरवर्ड देने के बाद कंक्लूड कर देना. सो दिस इज अबाउट द ग्लोबल इश्यूज. So like I said, the introduction of international issues is always do with the current affairs event. ठीक. अभी फोर्थ टॉपिक देखो, सेक्शन बी में फोर्थ टॉपिक मैनेजमेंट ऑफ इंडियन बॉर्डर्स. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. मतलब on the same line, like because it has a connotation of international issues under it, तो वो आप लिख सकते हो. द मैनेजमेंट ऑफ इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट अ कॉम्प्लेक्स टास्क. देखो, मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर अ कॉम्प्लेक्स टास्क. ये सबसे डिफिकल्ट लगता है क्योंकि वी थिंक कि वी डोंट हैव द कंटेंट अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर्स, बट एक्चुअली दिस इज वेरी इजी टॉपिक टू राइट. सो इसके वजह से मैंने डायरेक्ट वो बाकी के स्किप करके ये लिया है. तो बाद में बाकी के भी देख लेंगे. तो इसको कैसे लिखना है? मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर में हमेशा बॉर्डर को एक ब्रॉड वे में कर लेना. लैंड बॉर्डर, एयर बॉर्डर, एयर स्पेस कहते हैं उसको, और मैरीटाइम बॉर्डर. सही बात है. तो बॉर्डर है, मतलब बॉर्डर का इशू कब होता है? जब नेबरिंग कंट्री, जो नज़दीक की कंट्री है उसके साथ इशू हो जाता है. तो ऐसा तो नहीं है कि इंडिया के बॉर्डर इश्यूज है USA के साथ, UK के साथ, फ्रांस के साथ, रशिया के साथ, ऐसा तो नहीं है. इंडिया हैज़ अ बॉर्डर इशू विद द बॉर्डरिंग कंट्रीज, दैट इज नेबरिंग कंट्रीज. तो इसको लिखना इज इजी व्हेन यू नो व्हाट आर द इश्यूज ऑफ ईच नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. ठीक. तो इस मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर को लिखते टाइम ना एक सोशल पॉलिटिकल तो नहीं लिख सकते, बट आप यू कैन राइट दिस ऐसे इन कंट्री वाइज कि नेपाल के साथ क्या है, भूटान के साथ क्या है, पाकिस्तान के पास है, ETC. ठीक. सो अब हम देखेंगे कि एक ब्रॉड वे में आप कौन कौन से पॉइंट्स लिख सकते हो.
रफ मैप ऑफ इंडिया। सो तो यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक, तो यहाँ आता है नेपाल, भूटान, म्यांमार, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो यहाँ आ गए मालदीव्स, यहाँ मालदीव्स, और यहाँ श्रीलंका कहीं पर। ठीक, श्रीलंका, मालदीव्स, यहाँ आता है श्रीलंका। यहाँ लेट से कि यहाँ आएगा नीचे। तब हर कंट्रीज के साथ क्या क्या इश्यूज है उसको देखो। रिवर, काला पानी मैप, चाइना का इन्फ्लुएंस। ठीक, इसके बाद है कुछ सेफ हेवन फॉर सेपरेटिस्ट। ठीक, माउंटेनस बॉर्डर, सेफ हेवन फॉर नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स। फिर फाइनेंशियल क्रंच है भूटान के साथ, मतलब भूटान में तो उनके बॉर्डर मैनेज नहीं कर सकते वो अच्छे से। चाइना एक हेजेमोन है ऊपर के साइड में। सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला इशू, डोकलाम। ठीक, इसमें लिखो फ्री मूवमेंट रिजिम, इंसर्शन, ड्रग्स, गोल्डन ट्रायंगल। ठीक, फॉरेस्ट बॉर्डर, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं वहाँ। यहाँ रिवराइन बॉर्डर है क्योंकि एक ब्रह्मपुत्रा, मेघना, ये नदियाँ जाती है तो बहुत आसान नहीं है। ट्रैफिकिंग ऑफ कैटल्स, वुमेन, फिर टेररिज्म का प्रेजेंस है वहाँ। और क्या इशू है बांग्लादेश के साथ? रिवर इशू है, वाटर डिस्प्यूट है, वाटर डिस्प्यूट।
ईच इशू को थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना है, तो फिर उसको पता चलेगा कि ईच कंट्री के साथ कैसे कैसे बॉर्डर मैनेजमेंट के डिफरेंट इश्यूज है। ठीक, पाकिस्तान के साथ सर क्रीक हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, इंडस वाटर ट्रीटी हो गया, टेररिज्म हो गया, ये सब हो गया। श्रीलंका के साथ मैरीटाइम बॉर्डर इश्यूज है, एससी झेड का इशू, फिशरमैन का इशू, तमिलियन कॉज का इशू, मालदीव्स के साथ भी चाइना वाला इशू कि चाइना आ रहा है। तो दीज आर द ब्रॉड इश्यूज, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखो। फिर एक नॉर्मल इश्यूज की मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस प्रोटेक्टिंग एक वन बॉर्डर, बड़ा इशू है। फिर लाइक BSAF, ITBP सब फ्रैगमेंटेड सिक्योरिटी अपैरेटस, इंटीग्रेटेड फोर्सेस नहीं है, कंपार्टमेंटलाइजेशन है। इंटीग्रेटेड फोर्सेस मतलब तीनों फोर्सेस साथ में काम करना, टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन नहीं है। ठीक, हॉस्टाइल नेचर ऑफ villages towards army, budget constraints। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन्स, availability of weapons, so this is also issue. So you have to write whole essay around this issue and you have to give forwards around the each issue and each country. ठीक, so this is how this is a very easy topic to write. I hope कि this clears most of your doubts regarding the borders. तो क्या क्या हो गया हमारा, हमने यूनिफॉर्म कोड देख लिया, फॉरेन पॉलिसी ये देख लिया, ये देख लिया। ठीक, अब बचे 4 इश्यूज। ये देखो, सेम इश्यू वाइज लिख सकते हो। हाइपर ग्लोबलाइजेशन टू ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी, टू ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी। ये बहुत आसान है, आपको ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट ही लिखने हैं बस। तो यहाँ आप अपना डायमेंशन लिख दो, सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट होगा, पॉलिटी में क्या इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट होगा और इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट होगा। इसमें स्टेक होल्डर लिख देना, फैमिली पे क्या इम्पैक्ट होगा, इंडिविजुअल पे क्या इम्पैक्ट होगा, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक, फिर इसमें इंस्टीट्यूशंस में क्या होगा, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नेंस पे क्या होगा, कोऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट गवर्नेंस बॉडी, कोऑपरेशन उन पे क्या इम्पैक्ट होगा, और एट द डेमोक्रेसी पे ही क्या इम्पैक्ट होगा।
इकोनॉमी, एग्रीकल्चर पे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग पे क्या होगा, ट्रेड डील्स पे क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल डिस्पैरिटी, मतलब कुछ लोगों के पास है कुछ लोगों के पास नहीं है, इन्वायरमेंट तो ही, पोल्यूशन, ये सब। तो इसके अराउंड एक एक पॉइंट पकड़ के भी आपने एक्सप्लेन कर दिया कि सोसाइटी पे, फैमिली पे उनकी वैल्यूज कम हो जाएंगी, उनका एक दूसरे के साथ के रिलेशंस कम हो जाएंगे, फिर इंडिविजुअल का ऑटोनॉमी लूज हो जाएगा, प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, उसका इंडिविजुअल थिंकिंग खत्म हो जाएगी, सोसाइटी वाला हो जाएगा, ये सब। तो इसके आप एक अराउंड भी दो पैराग्राफ, एक दो पैराग्राफ ईच डायमेंशन पे लिख दे और फिर वे फॉरवर्ड लिख दे अराउंड द सेम इश्यूज, आपका ऐसे कंप्लीट हो जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन वाला ऐसे इज वेरी इजी टू राइट, बट यू जस्ट हैव टू हैव जनरल अवेयरनेस अबाउट व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद फिर कुछ भी मतलब ज़्यादा लिखने की पढ़ने की ज़रूरी नहीं होता, बस हाँ आपको थोड़े से एग्जांपल देने पड़ते हैं कि कल्चर कैसे इरोड हो रहा है, प्राइवेसी कैसे इरोड हो रही है, इकोनॉमी कैसे इम्पैक्ट होगा, एग्रीकल्चर पे क्या होगा। तो इसे आपको बताने के बाद ही आपका वो हो जाएगा। ठीक, तो मतलब उतना डिटेल में लेने की ज़रूरत नहीं है उस टॉपिक को। देख लेते हैं, थोड़ा फिलोसॉफिकल है, इसको हम फिलोसॉफिकल ऐसे कैसे लिखा जाता है उसके बारे में देख लेंगे। When law ends, tyranny begins। तो इसके इंटरप्रिटेशन पे ही ये हो जाता है कि ऐसे इम्पैक्ट हो जाता है इंटरप्रिटेशन पे ही। तो इंटरप्रिटेशन ऐसा ब्रॉड करना चाहिए फिलोसॉफिकल एसेस का कि सो दैट यू कैन कनेक्ट द इशू और टॉपिक टू ईच एंड एवरी डायमेंशन ऑफ योर एसे, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने बस इसको पॉलिटिकल टर्म्स में ले लिया कि पॉलिटिकल लॉज, मतलब रूल ऑफ लॉ में ले लिया कि एक बार एक लॉ खत्म हो गया, रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा तो टायरनी बिगिन हो जाएगी, तो आपका ना एक स्कोप ही कम हो जाता है आपके आंसर का। तो एक लॉ को ना एक ब्रॉड वे में पहले ही इसको अगर इंटरप्रिटेशन आपने ब्रॉड अगर नैरो किया तो डिफिकल्ट हो जाएगा लिखना, ब्रॉड किया तो फिर आप डायमेंशंस को टच कर सकते हो। तो इससे आपका ना एक ऐसे का वर्ड लिमिट भी हो जाएगा। ठीक, सही बात है। तो अब इंटरप्रिटेशन कैसे करो इस बस एक हो गया लीगल लॉ, मतलब जो पार्लियामेंट बनाती है, एक नेचुरल लॉज कि एवरीबडी शुड बी इक्वल, एवरीबडी हैज राइट ऑन हिज ओन बॉडी, एवरीबडी हैज चॉइसेस। तो अगर नेचुरल लॉ को पकड़ के ले लिया तो आप सोसाइटी लिख सकते हो,
इस सोसाइटी में वुमन को कैसा है, डिसएडवांटेज कम्युनिटीज लाइक एससी, disadvantaged communities like SC, ST, एज पीपल, डिसेबल पीपल, फिर पुअर पे कैसा है, उनके नेचुरल राइट्स पे। तो देखो कि उनके नेचुरल लॉ, जो नेचुरल लॉ है कि एवरीबडी बी इक्वल, एवरीबडी शुड हैव अ राइट और राइट ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये सब अगर ये ब्रेक हो गया तो क्या होता है, इनइक्वालिटी बढ़ेगी, पैट्रियार्की बढ़ेगी, फिर डिस्पैरिटी क्रिएट होगी, हैव्स एंड हैव्स नॉट क्रिएट होगा। तो इसे आप कनेक्ट कर सकते हो। सेम वे अगर पॉलिटी में लिख दिया कि एवरीबडी हैज राइट, दिस इज नेचुरल राइट वाला थ्योरी, नेचुरल राइट्स, तो ये गए तो फिर डेमोक्रेसी ही नहीं रहेगी, तो जिनके पास राइट्स है वो टिरेनी करेंगे, तो इससे इनइक्वालिटी हो जाएगा। सही बात। तो फिर एक पॉलिटिकल राइट्स, वोटिंग, वुमन को नहीं मिला तो क्या होगा, ये सब। फिर गवर्नेंस, कि गवर्नेंस वाला जो रूल ऑफ लॉ है, कि अगर किसी ने बुरा किया और उसको अच्छे से पनिश नहीं किया और उसको, तो फिर रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा तो करप्शन होगा। सही बात, करप्शन होगा तो फिर उसका पर्पस ही डिफीट हो जाएगा, तो टिरेनी हो जाएंगी करंट ऑफिसर्स की, तो वो लिख सकते हो। पॉलिटिकल करप्शन लिख सकते हो, पॉलिटिकल राइट्स हो गए। पॉलिटिक्स इन जनरल के बारे में लिख सकते हो कि पॉलिटिक्स के लॉज रूल्स को अगर आपने नहीं फॉलो किया तो टिरेनी ऑफ ओनली रूलिंग फैमिलीज हो जाएगी। तो इसको आप लॉ को मॉरल लॉज में भी इंटरप्रेट करके ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। मॉरल लॉ नहीं होगा तो इमोरल पीपल का टिरेनी हो जाएगा। टायरनी। ठीक, समझ आ रहा है कि टॉपिक को नैरो इंटरप्रिटेशन करने से आप डायमेंशंस को टच कर सकते हो, सोशल पॉलिटिकल। सेम इकोनॉमी में आप एग्रीकल्चर लिख सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग लिख सकते हो, सर्विस सेक्टर लिख सकते हो, एक ऑक्सफैम का रिपोर्ट लिख सकते हो रिगार्डिंग द इनइक्वालिटी इन द पे और मनी, इसके बारे में। समझ आ रहा है आपको ये कैसा? तो बहुत आसान है इसको लिखना। मतलब philosophical essays are very easy to write if you are able to interpret your topic in a good dimensions or good broad, in a nice broad way। ठीक, अगर ब्रॉड वे में नहीं किया तो फिर दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। फिलोसॉफिकल ऐसे आप, हमें लगता है कि फिलोसॉफिकल ऐसे प्लेटो और अरिस्टोटल के लैंग्वेज में लिखना चाहिए, ऐसा नहीं होता। इट हैज टू बी रिटन इन अ सिंपल लैंग्वेज, इट हैज टू रिटन विद द हेल्प ऑफ द जीएस 1 2 3 4, बट जस्ट यू हैव टू इंटरप्रेट टॉपिक इन अ ग्रेट डिटेल। अब इसको ही मैंने इसको ऐसे इंटरप्रेट करके दिखा दिया है कि मॉरल लॉज, नेचुरल लॉज, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिकल लॉज, इन्वायरमेंटल वाला, नेचुरल सिलेक्शन वाला लॉ। सर सही बात, डार्विनिज्म लिख सकते हो आप, नेचुरल लॉ को फॉलो नहीं किया तो क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम नहीं रखा तो पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ये सब हो जाता है। तो इसके बारे में लिखा, देखो हो गया आपका एक ऐसे अच्छा, तो कुछ बड़ा चीज नहीं लगती। सही बात। तो टेक्नोलॉजी में लिख सकते हो कि रोबोटिक्स में अगर लॉ को फॉलो नहीं किया तो टिरेनी ऑफ रोबोटिक्स, टिरेनी ऑफ टायरनी ऑफ मशीन्स, टायरनी ऑफ apparatus हो जाएगा इंस्टेड ऑफ पीपल। हैव्स एंड हैव्स नॉट, इसको एक हमेशा लिखोगे, डायमेंशन कंसिडर करोगे आपकी हैव्स एंड हैव्स नॉट, तो आप अच्छे से हैव्स एंड हैव्स नॉट, मतलब कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। समझ आए? कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। दिस इज अ हैव एंड हैव्स नॉट। तो वही लिखना है ना आपको कि लॉ नहीं है मतलब इक्वालिटी नहीं है, तो बस कुछ लोगों के पास कुछ है। तो अगर हैव्स ज्यादा है तो हैव्स नॉट कम हो जाएंगे। यही लिखना है आपको पूरे ऐसे में। तो थोड़ी डिफिकल्ट है ऐसे लिखना, बहुत आसान है।
डायमेंशन वाले ऐसे जो होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, बस टॉपिक को कनेक्ट करो डायमेंशन से, ठीक हो गया। अब वही देखो, दैट गवर्नमेंट इज द बेस्ट विच गवर्न्स द लीस्ट, इस स्पेसिफिक गवर्नेंस के बारे में कह रहा है। तो सोसाइटी का गवर्नेंस, प्राइवेसी, पॉलिटिकल गवर्नेंस मतलब राइट, इलेक्शन, ठीक, पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरफेरेंस, इन सब के बारे में लिखोगे तो अच्छा हो जाएगा। ये भी फिलोसॉफिकल है, बस उसको टॉपिक को कनेक्ट करो, समझ आए। तो वही मैं अब सेम बताया है जैसे, वही मैं नहीं बताने वाला कि गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्न्स द लीस्ट, कि उसको भी आप लिख सकते हो फिलोसॉफिकल वे को, बस कनेक्ट करो उसको आप आपके टॉपिक से। एक बार टॉपिक से कनेक्ट हो गया आपका ऐसे, तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं आती सच में, बस की इंटरप्रिटेशन इज इम्पोर्टेंट। तो थर्ड, लिबरल डेमोक्रेसीज, टिरानी ऑफ मेजॉरिटी। अब वही लिखना है आपको, देखो अभी जो हमने टॉपिक दिखा है, लिबरल डेमोक्रेसी इज द टिरानी ऑफ, यहाँ क्या है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि वन वोट वन वैल्यू। तो इसका मतलब है कि हर एक वोट को एक ही वैल्यू है। तो इसका मतलब जब ज्यादा वोट जिसको पड़ेंगे वही होगा रूलर। तो दिस इज अ मेजोरिटी वोट्स, दिस इज अ टायरनी ऑफ मेजोरिटी। राइट, so this is a statement by some thinker, I think it was a कोई तो है, रॉल्स या रूसो है, किसका तो ये स्टेटमेंट है कि लिबरल डेमोक्रेसी इज अ टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। मेरे को याद नहीं आ रहा किसका स्टेटमेंट है। अब दिस इज अ कंटेस्टेड, मतलब दिस इज अ डिबेटेबल टॉपिक। मेरे को पता है कि किसी ने भी इसको चूज नहीं करा होगा, बिकॉज दिस इज वेरी फिलोसॉफिक और डिफिकल्ट टू राइट, देयर आर वेरी फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस। तो मेरे को पता है किसी ने नहीं लिखा होगा, तो बस एक आइडिया देके छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी नहीं लिखता इसको, क्योंकि डिफिकल्ट है। तो डिबेटेबल टॉपिक है कि लिबरल डेमोक्रेसी से टायरनी ऑफ मेजॉरिटी होती है या नहीं होती, सही बात। तो अब आपको दोनों साइड लिखने पड़ेंगे। यस it is, no it isn't। सही बात। यस क्यों? क्योंकि जिसको ज़्यादा वोट उसको है, क्वालिटी ऑफ वोट नहीं होता, वोट बैंक पॉलिटिक्स होता है, रिलीजियस कास्ट लाइंस पे वोटिंग्स होती है इंडिया में, ठीक। फिर जिसके पास पैसा है वो ही और शी कैन कैंपेन वेरी हार्ड फॉर द इलेक्शंस, राइट। सो दिस क्रिएट द पावर्स इन फ्यू। सोशल मीडिया जिसके पास अवेलेबल है, एक मशीनरी, कैंपेनिंग मशीनरी जिसके पास अवेलेबल है, तो उससे भी एक इम्पैक्ट हो जाएगा। तो दैट इज, यस इट इज अ टिरानी ऑफ मेजॉरिटी। समझ आ रहा है कि कैसे इट इज अ टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? नो इट इज नॉट। तो लिबरल डेमोक्रेसी से ईच इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस मिलता है, ईच इंडिविजुअल के वन वोट को इम्पोर्टेंस मिलता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन्स, ठीक। तो उसके वजह से उसके राइट्स का रियलाइजेशन होता है। लिबरल डेमोक्रेसी में एक इंडिविजुअल को एक यूनिट कंसिडर किया जाता है, नॉट एज अ वोट, ठीक। तो उसके वजह से उनके राइट्स का प्रोटेक्शन होता है। ईच लॉ इज मेड फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल who are elected by the people, so that is why it is not tyranny of majority। तो फिर देखो एक एविडेंस बताता है कि वुमन का रिप्रेजेंटेशन बड़ा है
SC/STs का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, ब्लैक्स का बढ़ा है, अफ्रीकन अमेरिकन्स का बढ़ा है रिप्रेजेंटेशन इन अमेरिका. So these are the evidence that liberal democracy is not tyranny of majority. तो इनके अराउंड आपको लिखना पड़ेगा. But yes, points are few, but we have to elaborate that in a much detail. So that's why it becomes difficult to write a liberal issue like this. लिबरल डेमोक्रेसी द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी. बट अगर डिफिकल्ट है तो यस लिखने के बाद, नो लिखने के बाद जस्ट लिखो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द लिबरल डेमोक्रेसी. तो आगे क्या होगा लिबरल डेमोक्रेसी से, तो उसको कैसे चेंज करा जा सकता है, मतलब एक सॉल्यूशन दे दो, अवेयरनेस क्रिएट करो राइट की, पॉलिटिकल प्रोसेस को अच्छे से करो, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बंद करो. ठीक, तो we have to write something as a solution to liberal democracy कि liberal democracy में क्या करना चाहिए. तो राइट्स का प्रमोशन करो, make people aware about their rights, make sure that the electoral process or electoral apparatus are working properly, that we are just not focusing on a majority of votes, we are focusing on the on each vote like minority. ऐसा भी तो लिबरल डेमोक्रेसी में अब तो इसके नो में कैसे लिख सकते हो कि गवर्नमेंट इलेक्टेड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स इज आल्सो वर्क फ्रॉम द माइनॉरिटी ऑफ माइनॉरिटीज आर नॉट वर्किंग. ऐसा नहीं है कि जस्ट मेजॉरिटी ने वोट कर दिया तो माइनॉरिटी जो भी वोट नहीं करता उनके लिए कोई भी फंक्शन या कोई भी स्कीम्स नहीं गवर्नमेंट लाती है, ऐसा कुछ नहीं है. तो उसके बारे में लिखो कि गवर्नमेंट को हैज़ टू वर्क और प्रोएक्टिवली for the minority people. Minority मतलब not religious minorities, votes that they couldn't get so that they could get in a second election. So conclusion में ऐसा लिखो कि liberal democracy by procedural level is becoming of a tyranny. Procedural दो एस्पेक्ट होते हैं, प्रोसीजर्स and substantive. तो प्रोसीजर से यस इट इज अ टायरनी ऑफ मेजॉरिटी. सब्सटेंटिव से मतलब कि उसका इसेंस, बट इसेंस नहीं है वो. टायरनी ऑफ मेजॉरिटी इज नॉट अ इसेंस ऑफ अ लिबरल डेमोक्रेसी. प्रोसीजरल मे बी ड्यू टू द प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रोसीजरल नेसेसिटी it is becoming a tyranny of majority, but due to the substantive aspect it is its essence is the nature tyranny of majority. ऐसा लिखो. then लिखो कि we have to make sure that कि the democracy is not working according to the procedures, it is working according to the substantive nature of democracy, essence of democracy. So बट एक ऐसा भी लिखो कि कंक्लूजन में कि इफ एनी पार्टी जस्ट फोकसिंग ऑन मेजॉरिटी ऑफ वोट्स दैट पोल्ड एंड नॉट ऑन द माइनॉरिटी ऑफ वोट्स, इट लूजेस चांस टू गेट इलेक्टेड इन सेकंड ईयर, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज रिपीटेटिव नेसेसिटी ऑफ पीपल्स मैंडेट. मैंडेट सही बात है. तो इसके बाद रिपीटेटिव नेसेसिटी ऑफ प्रोसीड द पीपल्स मैंडेट मतलब पीपल्स वोट, पीपल्स अप्रूवल, दैट इज वन ऑफ द की इसेंस ऑफ अ सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी. प्रोसीजर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी. तो उसके बारे में लिखो और कंक्लूजन करो कि लिबरल डेमोक्रेसी हैज टू वर्क ऑन इटसेल्फ और इट्स प्रिंसिपल्स सो दैट इट डजंट बिकम अ टायरनी ऑफ मेजॉरिटी. इट वाज वन इजी टॉपिक है, बट हमारे पास उतना कंटेंट नहीं होता, तो सेम पॉइंट्स को रिपीटेटिवली अलग अलग डायमेंशन से एक्सप्लोर करके हमको वो लिखना पड़ता है. तो आई थिंक दिस इज विद essay I have told you a new method to write essay, like writing around the issues and not on the sectors or stakeholders. Okay. Then we have dealt some essays in great detail, so I don't think
एनीथिंग एल्स इज नीडेड टू राइट ऐसे एक्सेप्ट दोज पॉइंट विच आई डिस्कस है. बस एक बताना एक अलग बात होती है, लिखना एक अलग बात होती है कि आई हैव टोल्ड यू हाउ टू राइट, बट दैट इज माई स्ट्रैटेजी, दैट इज हाउ आई राइट. So until and unless you utilize how I write in your writing practice, you will not able to write what or how to write exactly. Okay, so try to write more and more. If you have, let's say you have chosen these 2 essays, so make sure that you go home and you write something about these essays, at least prepare rough work around the remaining essay topics. So this will help you in at least having some rough idea about each and everything. So prepare theme wise. There are few themes like government, foreign policy, border, education, health, economy. Those are repeated in every now and then. So उनको अच्छे से prepare करने के बाद you will get अच्छे marks. So at least aim 125 marks. I always get 132 plus. So उसके difference create हो जाता है. At least this is very easy to get 125. So make sure that you are getting 125 प्लस मार्क्स इन्हीं से. जस्ट एक ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छे से करना आना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड रफ वर्क, एक इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सब मैनेज हो जाता है. बस ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड रफ वर्क अगर बॉडी के बारे में अच्छे से कर लिया तो फिर हो गया. So this is it from my side. I hope this was helpful for you. Thank you.